Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students in general, and all the viewers as well. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. This class 9th. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहे थे बिकॉज दे आर रिलेटेड लेसन्स एंड इम्पॉर्टेंट लेसन्स एज पर द केमिस्ट्री इज कंसर्न. जो 9th की जो केमिस्ट्री है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर है एटम, दीज आर द बेसिस फॉर द केमिस्ट्री दैट यू विल कम अक्रॉस इन योर हायर क्लासेस. इसलिए यहाँ पे ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बेसिक लेवल पे समझने की ज़रूरत है. जब हम यहाँ पर बेसिक लेवल पे अच्छे से अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री पढ़नी आगे आने वाली क्लासेस में, हायर क्लासेस में आसान होगी. दो द कंसेप्ट्स विल बी ब्रॉडर, लेकिन उनको समझने में आपको थोड़ी बहुत आसानी होगी अगर आप यहाँ पर कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं. व्हाट वी डिस्कस सो फार इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. छना पता कि एटम यह बनियामत 3 सब एटॉमिक पार्टिकल युस अलग अलग साइंटिस्टों अलग अलग वक्तन पे डिस्कवर दिते करित बाय experimentally they discovered that atom is made up of 3 subatomic particles: positive charged protons, negatively charged electrons, and a neutral charged neutron. They are all present in the atom. After that it was observed, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी ऑब्जर्व किया गया that electrons are so small in mass. The electrons are so small, they are having so small mass that their mass is taken as negligible. That is, in the mass of the atom, in measuring the mass of the atom, the electrons are having no role. It is like that, जैसे अगर इस दुकानदार निश खंड आनो, ठीक, खंड की मैं ज़्यादा बात करता हूँ, खंड आनो और ये खंड त्रकरे मज तोला तोला कर सकूँ अख लकट वरेत से बड़. अगर मैं चोटी की बात करूँ, फिलहाल अगर समझने के लिए वही आप याद रखें कि अख लकट रई या रई खोत लकट कह क्यों बे अथ पे खंडस पे, क्या आप उस दुकानदार से कहोगे कि आपको वजन अलाव? ठीक नहीं. क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू दैट मास ऑफ द शुगर, द मास ऑफ that ant or that microbe, it is taken as negligible. ठीक, इसी तरह जो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो देखा गया है इसका मास इतना स्मॉल है विच इज टेकन एज नेग्लिजिबल. फिर रहते हैं 2 एटम्स, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्या स्टेट रोज़ा पर प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन. स्ट्रक्चरली एंड एक्सपेरिमेंटली it was observed or proved that these protons and these neutrons, they are present in the center of the atom. उनका अच्छा मौजूद in the center of the atom. शाबाश. In the center of the atom, occupying a very small space inside the atom. The protons, the neutrons आसान atomic centers मन्स, and the center is called the nucleus. जैसे रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर करके दिया. ठीक है ना. अब हम ये कह सकते हैं जो भी एटम का मास है दैट इज कंटेनड इन द न्यूक्लियस. एटम्स इस वॉल्यूम आसान वॉल्यूम हेक्ता बोड़ ते मगर इस तमिक मास दैट इज कन्फाइनड इन द स्मॉल एरिया इनसाइड द एटम, इनसाइड द सेंटर ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. और ये मास किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ इट इज प्रोटॉन्स एंड बिकॉज ऑफ इट इज न्यूट्रॉन्स. अंडरस्टैंड? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एटॉमिक नंबर, जो बार बार आपसे पूछा जाता है, बार बार आपके सामने दोहराया जाता है. एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इन सिंपल वर्ड्स, एटॉमिक नंबर, पहले मैं यहीं पे लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. ठीक है. Atomic number is the number of positive charges in an atom, present in an atom or in an atom, or we can say that, or
we can say that atomic number is the number of is the number of protons protons in an atom. अकबल लिखित गुरु शाबाश बताइए क्या ये सही लिखा मैंने क्या मैंने इस रिलेट किया ठीक मैंने कोई गलती तो नहीं की आप देखिए डेफिनेशन के लिस्ट में एटॉमिक नंबर हसा वनान कि कुन ते एटमस मज कसा पॉजिटिव चार्जेस आसन दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर और मैंने इसका और लिखा या हसा हेको इस वन एटॉमिक नंबर हसा गो कुन ते एटमस मज कत्या आसन प्रोटॉन्स तो एक सी बात है कि नहीं क्योंकि प्रोटॉन की जो चार्ज है वो क्या है पॉजिटिव अब एटम में कितनी पॉजिटिव चार्जेस हैं इट मीन्स एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं क्लियर तो जैसे आप जो भी डेफिनेशन लिखेंगे चाहे आप ऐसे लिखो द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम और वी कैन से एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम क्लियर और आप देख रहे मैं कुछ गलत नहीं लिखूं तो आप कहना वहां से और atomic number can also be defined as number of electrons in an atom or number of negative charges in an atom मैं ये भी लिख सकता हूँ why क्योंकि we know that atom is naturally neutral एटम नेचुरली न्यूट्रल आसन मतलब गो कि एटमस मज पॉजिटिव चार्जेस तो नेगेटिव चार्जेस बराबर तेल एटम न्यूट्रल और अगर कुछ एटमस मज पॉजिटिव चार्जेस 5 अत मज नेचुरली नेगेटिव चार्जेस 5 तेल यह न्यूट्रल एटम ठीक अयान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अयान्स में ये नहीं है अयान्स में ये डेफिनेशन नहीं है अयान्स में अगर हम यहाँ देंगे अयान तो ये डेफिनेशन नहीं है तो ये वाली डेफिनेशन नहीं है हाँ ये दो चलेंगे वहाँ पर भी लेकिन अगर अयान तो आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लिखे भी हैं अयान्स आर फॉर्मर व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन तो एट दैट टाइम दिस डेफिनेशन विल नॉट वर्क ठीक लेकिन हम एटम की बात कर रहे हैं मैंने अयान तो नहीं लिखा मैं एटम की बात कर रहा हूँ एटम एज ए होल इज न्यूट्रल इट इज बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस is equal to the number of negative charges in the atom. If number of positive charges is called atomic number, then a number of electrons is also called atomic number because in an atom a number of protons is always equal to number of electrons. This is the definition of atomic number. Now for example, atomic number of the first element that is hydrogen is 1. What does it mean? The atomic number of hydrogen is 1 means in an atom of hydrogen there is only one proton or there is only one electron. Are you all samajh? Atomic number of helium is 2. What does this mean? It means the helium has 2 protons and or how we can say that it has 2 electrons. In an atom of helium, in one atom of helium there are 2 protons and 2 electrons. Shabash. We can take an example of some heavier element. For example, atomic number of mercury, Hg, it is 80. What does it mean? It means in an atom of the helium there are 80 protons or we can say that there are 80 electrons. 80 electrons. और the common elements that you come across is carbon. हम क्या लिखते हैं atomic number 6. What does this mean? The 6 means then in one atom of the carbon there are 6 protons or there are 6 electrons. Atomic number of oxygen is 8. It means in one atom of oxygen there are 8 protons or there are 8 electrons. Hope you got that. ठीक second topic ये आपको clear हो गया Second term that we are going to discuss is mass number. Mass number, it is denoted by capital A. What is mass number? As we already discussed that the atom is composed of 3 types of subatomic particles: electron, proton, neutron. But electrons, the mass of electron is taken as negligible.
देन व्हाट इज द मास ऑफ एटम कंपोज्ड ऑफ? तो आप ही बताइए फिर, अगर त्रेन एटमन त्रेन सब एटमिक पार्टिकल बनियामुत अकिस पार्टिकल्स वन अत मास कह मास मुजरा कह तेल कमुक मास एटमस मज दोन सब एटमिक पार्टिकल कमुक कमुक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन the sum of number of protons plus number of neutrons gives the mass number. Shabash. The mass number is the sum of protons and neutrons present in the न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर. शाबाश बेटा, जरा रिपीट कीजिए मेरे साथ. क्या है ये? सम ऑफ protons plus neutrons, sum of protons and neutrons, that is proton plus neutron, number of protons plus number of neutrons. और मैं ऐसे ही लिखूंगा, और number of protons यानी positive charged particles plus number of neutrons neutral particles. स्पेलिंग पे ऐसा होता है तो वो चलेगा फिजिक्स में, साइंस में. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर, और सिंपली वी कैन से दैट A इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक. नाउ शायद एग्जांपल से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल atomic number of hydrogen is 1. Atomic number of hydrogen is 1 and hydrogen is the only element in the periodic table having no neutron. What's the neutron? Okay. Tell me mass number of hydrogen. Mass number of hydrogen is equal to 1 because it is having only one proton, no neutron. Atomic number भी 1 है, mass number भी 1 है. Mass number of helium is, it is having 2 protons plus 2 neutrons, that is equal to 4. Then the atomic mass of helium is 4 because it is having 2 protons, 2 neutrons. ठीक. Mass number of oxygen is 2. इसके पास ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8, that means 8 protons, और इसके पास है 8 neutrons. तो इसके न्यूक्लियस में कितना मास होगा? It is 16. आई बात समझ? इसी तरह almost the number of protons in an atom is almost equal to the number of neutrons in the atom is almost equal to the number of protons. यानी almost से आसान ये कुन एलिमेंट्स एटमस मज प्रोटॉन ती आसान न्यूट्रॉन, but this is not the case for all the atoms. ये प्रत साथ ये केस मुमकिन कह, ये क्या प्रत जगह इतनी बराबर रही. उसकी मैं एग्जांपल दूंगा. अभी हमने लिखा मरकरी. अगर हम लेते हैं मास नंबर ऑफ मरकरी Hg, आपको पता है क्या है? फिर आप खुद बताना. मास ऑफ मरकरी इज 200. मास ऑफ मरकरी इज 200 यूनिट्स. इसका मास, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी जो मैंने अभी कहा, दैट इज 80. दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन मरकरी इज 80. शाबाश. That is number of protons in the mercury is 80. Number of protons in 80 plus कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे ताकि ये टोटल बनेगा 200. तेल कहते न्यूट्रॉन से थोड़ी, तेल कहते न्यूट्रॉन से आत्मस, क्योंकि टोटल मास नंबर जो इसका है 200 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीन एटॉमिक नंबर से दैट इज 80. तेल कहते न्यूट्रॉन, it is 120. With the mass of the mercury is 200, but its atomic number is 80. You can say sheet मगर at mass number 200, it means or it indicates that the number of protons in the atom of the mercury is more than that of the number of
मैं रिपीट करता हूँ, मास ऑफ मर्करी इज 200, एटमिक नंबर 80, अमुक मास गए 80 + 80 सह गए 160, लेकिन अत 200, इट इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in the atom of mercury is more than that of the protons. अत में न्यूट्रॉन ज्यादा, यहाँ पर देखिए आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन अत कत 60, न्यूट्रॉन 120, अति वन अमुक मास नंबर 120 + 80 = 200. तो इस तरह आपको यह क्लियर हो गया दैट व्हाट इज मास नंबर, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये आपको ज़रूरी याद रखना है क्योंकि इस यूनिट के आखिर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. तो वहाँ पर शायद नहीं, ये आपको फिर से दोहराना पड़ेगा व्हाट इज मास नंबर, इसलिए वो याद रखिएगा. नाउ इफ वी टेक एन एलिमेंट, से फॉर एन एलिमेंट x, ठीक, अब इसका मास नंबर ऐसे लिखा जाता है, यहाँ मास नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, मरकरी atomic number 80, mass number 200. This is how we can represent the atom along with its atomic and mass number. And the last topic that we are going to discuss today, it is electronic configuration. जैसे हमने बहुत मॉडल में पढ़ा that electrons are revolving around the nucleus in the fixed energy levels called shells. In the fixed orbitals called energy levels are called shells in the Bohr's model. And according to Bohr's model, प्रत कुन energy level, प्रत कुन orbitals, युस यमन orbital वनान यमन पेठन electrons revolve करन छ, यमन orbital छ energy fixed means कि छ हेकन, they can accommodate yes fixed number of electrons. Each energy level has fixed energy. Fixed energy means प्रत कह energy level छ करन accommodate मखसूस number of electrons. यानी a fixed number of electrons है प्रत कह energy level accommodate करित. आई बात समझ? इच्छने के ऐसा आनो 10 इलेक्ट्रॉन त्रो गोडनी शेल में नो, ऐसा नहीं है. 3 इलेक्ट्रॉन आनो पन्नी मर्जी पे नहीं. कते इलेक्ट्रॉन कत शेल में वातन, ये इलेक्ट्रॉन होल्ड करने खतर एनर्जी जरूरत. ये एनर्जी प्रत कुन शेल फिक्स्ड, इसलिए हेकन प्रत कुन शेल में फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodate गशित. Now how many electrons are in the shells? In which shell how many electrons are there? Godni shell mus kurs, duyum mus kurs, triyum mus kurs vatan, suri mus kurs vatan. This arrangement of elements, the systematic arrangement of electrons, क्योंकि protons तो neutrons अलग है. अब कौन है electrons? The systematic arrangement of electrons in the fixed energy levels is called electronic configuration. So what is electronic configuration? Electronic configuration किससे कहते हैं? ये definition क्या है इसकी? The systematic distribution of electrons, the systematic distribution of electrons in different energy levels, or we can say at orbits around the nucleus is called electronic configuration. The systematic distribution of electrons in different energy levels around the nucleus is called electronic configuration. And these electrons are distributed in these orbits by a scheme. That scheme is known as Bohr-Bury scheme. There is a scheme for the distribution of electrons. There is a scheme, a तरीका. ठीक, यम तरीक सहित इस electrons हेको accommodate करनयत in different shells, यम सहित असी पता लग कि कत shell मस कते electrons हेकन accommodate गशित, कत shell कस accommodation capacity छ. There is a scheme, and that scheme is called Bohr-Bury
बुरी scheme. According to this scheme, the electrons that can be accommodated in any shell. मैं पहले अंग्रेजी में बोलूँगा फिर आपको उर्दू में भी कश्मीर में भी समझाऊंगा. The electrons that can be accommodated in any shell is given by the formula 2n square. Number 1. क्या कहता है ये स्कीम? The electrons that can be accommodated in any shell or orbit, आप जो भी नाम लिखेंगे, orbit is given by the number of electrons. The number of electrons. The number of electrons that can be accommodated in any shell or orbit in a given is given by the formula 2m square. 2m square. Where 2 आपको पता है, ठीक, तो कांस्टेंट ही है, इसका वैल्यू तो हमें पता है, 2 तो 2 ही है. Where n is the number of shell. N stands for the number of shell. जैसे हमने ये कहा that first shell is called K shell, second shell is called L shell, third shell is called M shell, fourth shell is called N shell. Now let us find out how many electrons can be accommodated in the K shell by using this formula 2n square. यहाँ पर हम करते हैं K, it is first shell, formula लगाते हैं 2 into n square. N means number of shell. Kachim shell से K गोनिच goes 1 square. That is equal to 2 into 1 square. 1 1s are 1. That is equal to 2. The maximum electrons that can be accommodated in the first shell is 2. Now how many electrons can be accommodated? What is the accommodation capacity of the L shell? It is 2 constant into n square. N means a kachim shell. Shuduyim shell go 2 square. That is 2 into 2 2s are 4, 4 2s are 8. Third shell, M shell, it is third shell. 2 into, that is 3 square. That is 2 into 3 means 3 3s are 3 square means 3 3s are 9. That is 18. Fourth shell, 2 into, that is 4 square. That is 2 into 4 4s are 16. And 16 2s are 32. This is how we can find out the accommodation capacity of each shell around the nucleus. This is the first point of this बहुत बुरी scheme. Hope you got this first point. The second point is, जो शायद आपको थोड़ा confusion यहाँ रहेगा, लेकिन that will be clear in your higher classes. फिलहाल आप ये याद रखिए, the maximum electrons, the maximum number of electrons present in the outermost shell of an atom is 8. ये थोड़ा आपको confusion यहाँ पे करेगा, लेकिन confusion can be accommodated. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell, वो जल्द ठीक रहेगा. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell of an atom is 8. हाँ, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है? जिस ऑक्टेट रूल जो आप आगे भी पढ़ेंगे 10th वाली केमिस्ट्री में भी, क्योंकि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, it means that the having 8 electrons in the outermost shell, having 8, one of the points that it clears is that having 8 electrons in the outermost shell makes an atom stable. Gonish thawan tay be akkat yaad. Bohur buri model छ वनान, दबन कतिया electrons कथ shell मज वातन यह सा हेको इस करित by the formula using 2n square, where n is the number of shell. दोयम कथान याद, electrons क्या छ करन बनावन, elements क्या छ combine गसान बनावन molecules compounds in order to get stability. और कोई reason नहीं है. There is no need for an atom of an element to combine or react with other atom or element. ठीक? Only one need, only to satisfy one need, that is to make themselves stable.
एलिमेंट्स जो अनस्टेबल हैं, स्टेबिलिटी भी आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन एलिमेंट जो अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग और गेनिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि मकसद तो स्टेबिलिटी का है, अब अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम दैट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, चाहे वो जो भी शेल है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 100th व्हाट्सएवर में भी, अगर कोई किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कितने? 8, इट इज स्टेबल, that are enough for an atom to be stable. इसलिए on that very basis we can say that the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell of an atom is 8, though its capacity may be more than 8. कैपेसिटी आशा 8 खुद ज्यादा, 18 थे, 32 थे, 56 थे, ठीक, मगर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स युस अमिस स्टेबिलिटी हासिल करने खतर निबरिम शेल मज ज्यादा खुद ज्यादा जरूरत है, दैट इज 8। और यहाँ पर और एक कंसेप्ट आता है फिर सब शेल्स का, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं, फिर वो एस शेल, डी शेल, पी शेल, क्योंकि फॉर दैट मैंने पहले ही कहा कि केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको बेस, पहले आपकी बेस बननी ज़रूरी है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझिए, फिर जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ पर KLM नहीं है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे SPDF शेल्स, तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन what you are supposed to remember for 9th and 10th and for the basics of the chemistry is that the maximum electrons that can be accommodated in the outermost shell that makes atom stable is 8. But stability khatar gasan asan nibrim shell muz maximum electrons akis atoms kas 8. That is what here is written as the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell of an atom is 8. क्योंकि वहाँ पर वो electrons और protons की वो force of attraction जो मैंने कहा था कि अलमोर से आके, ठीक, अलमोर से आके अगर एक से अलमोर आके शल बनाओ, पता उस किताब मंज ये कर ये बार बर्दाश्त कह ये फुटित, इसके कर पता डिवाइड करान मुख्तलिफ शलमन मंज, मगर अलमोर से मुझे आके आई का समझ, अलमोर से मुझे आके शल छी मुझे आके, मगर ताकि वो न्यूक्लियर फोर्स तो इलेक्ट्रॉन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस करने खतर इलेक्ट्रॉन्स गसान डिवाइड इनटू सब शेल्स, गसान डिवाइड इनटू सब शेल्स, तो तश फिलहाल तो तुम वातन खतर वही टाइम थो ये याद कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यम निबरिम शेल मज कम से ज्यादा खुद ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी खतर जरूरत, दैट इज 8। एंड द थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर एडेड इन एन सिस्टमैटिक ऑर्डर, दैट मीन्स तो नो शेल बनान कह, electrons add, electrons do not form any new shell, electrons do not form any new shell, मैं ये यहाँ लिखता हूँ, electrons do not form any new shell unless unless the inner shells get completely filled, unless the inner shells are completely filled. That means they are filled in a systematic order of 1 2 3 4 5. देखा मतलब गो सो ये मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन से अरेंज करें, पहले पहली शेल में कंप्लीट करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तम पच त्रावन दोमी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तम पच त्रावन त्रेमी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही चलना है। ये नहीं है कि इस तरह दोम शेल इनकम्प्लीट त्रेम शेल बनाओ ना, नो, electrons do not make any new shell unless the inner shells are completely filled. This is the Bohr's model scheme which shows or which demonstrates us that how are electrons distributed in the shells around the nucleus. Hope you got that. And this systematic distribution of the electrons in the shells around an atom or nucleus of an atom is called electronic configuration. अब electronic configuration of first 20 elements, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हैं। अगर आप वहाँ पर अभी नहीं गए हैं तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब से, तो वहाँ पे आपको वो लेक्चर मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग टॉपिक था, 2 दिन लगे हैं उसमें। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टमैटिक वेज में और स्ट्रक्चर के हिसाब से वहाँ पर दी गई हैं। यू कैन क्लिक ऑन दैट और यू कैन
लुक फॉर दैट इन द यूट्यूब चैनल ऑफ माइन। तो इंशाल्लाह आपका ये सब कुछ क्लियर होता है यहाँ तक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी, एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी। अब इस यूनिट में यानी इन 2 यूनिट्स को मिलाकर 2 टॉपिक्स रहते हैं, वो छोटे से ही हैं। व्हाट इज एटॉमिक व्हाट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, दैट विल बी द लास्ट lecture perhaps from this unit। इसके बगैर भी अगर कुछ रहता है, I will go search for that, but I request you that go for them, search for all the lectures from the 9th class। एक कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, असाइनमेंट कॉपी बनाइए। जहाँ पर कहीं कोई दिक्कत रहती हो वहाँ पर हमें SMS कीजिए, और भी बच्चों को थोड़ा अपने लेवल पे आप इन्फॉर्म करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ जाएँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे क्लास में ही जुड़ जाएँ। आज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि अब आपको घर बैठे ऐसी स्कूलिंग मिल रही है जो शायद आपको अपने स्कूल में रह के ना मिले, वहाँ मिलती। क्योंकि अब बहुत सारे टीचर्स और हाईली क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड टीचर्स आज यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, जूम एप्लीकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ सोर्सेज से लेक्चर्स देते हैं। एक ही टॉपिक पे डिफरेंट लेक्चर्स आते हैं। नाउ इट इज़ योर टर्न, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप इसके साथ कैसे खेलोगे, आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। स्कूल में आपके सामने एक ही टीचर है, जो ये पढ़ाएगा वही। नाउ यू हैव गॉट सो मेनी टीचर्स, ठीक, फ्रॉम द ऑल कॉर्नर्स ऑफ आवर स्टेट, जो डिफरेंट एक ही टॉपिक पे डिफरेंट लेक्चर्स देते हैं। अगर आप हर एक का कंपेरेटिवली जायज़ा लेंगे, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यह मौका आप इसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए, कामयाब आने वाली ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अल्लाह आपको सुनने के बाद इस पर अमल करने की तौफीक अता करे और साथ ही साथ इस वबाई बीमार से आपको महफूज रखे। खुदा हाफिज़।